Bismillahirrahmanirrahim. The second session. We have to talk about the ranking criteria by University Ranking Criteria of Higher Education Commission Pakistan. Earlier we have discussed the international criteria for universities ranking. Ranking of Pakistani higher education institutions. HEC Pakistan is the first one in the Islamic world that has developed ranking criteria as well as methodology conducted ranking exercise. Initiative of QS ranking was taken up by HEC with the objective to promote a culture of participating in the world university ranking. Therefore, accordingly, it also intended to get a reasonable reflection regarding the development of higher education institutions in the country. Ranking criteria and scores used by the Higher Education Commission Pakistan for the universities is given below, where first of all, quality assurance is considered, that is 15%. Then teaching quality, teaching learning environment 30%, research 41%, finance and facilities 10%, social integration and community development is the 4%. Thus it makes total 100%. This is the criteria and the sources and the weightage according to which Higher Education Commission Pakistan goes for ranking of the universities. Rather they are public or private universities. For both of them, similar criteria is used. If I share with you in detail all those 5 factors, first of all, I would like to discuss in detail the quality assurance. That is about the adoption, implementation of Higher Education Commission eligibility criteria for appointments of faculty members. Its weightage is 4. Adoption, implementation of HEC criteria in masters 1. Adoption, implementation of HEC criteria for PhD 1. That is the weightage basically. Adoption and implementation of HEC plagiarism policy. Weightage is 2. Rating of QEC of the higher education institutions 3. Number of international awards won by students 1. Affiliation of programs with higher education recognized accreditation councils, bodies like business, agriculture, computing, PMDC, engineering, PEC, and education 2 marks. Ranking of higher education institutions in latest international ranking 1. Thus all these 8 criterion unites to make 15, that is the subtotal of first rank. Second is the teaching learning environment. Here first of all it is considered a ratio of full-time faculty to total faculty 3 इसके हैं marks. Ratio of full-time PhD faculty to full-time faculty, total faculty 7 marks. Full-time teacher-student ratio 7 है. Selectivity, enrollment ratio, fresh intake
total applicants 4 है. Number of trainings of full-time faculty members 2. The ratio of their faculty having international degrees from other institutions over total full-time faculty members 2 marks. Number of national awards won by full-time faculty members per total full-time faculty is 1. Number of international awards won by full-time faculty members per total full-time faculty 2 marks. Ratio of fresh PhD faculty over total fresh recruitment of faculty on the basis of 3 years data. Total score is 30. Accordingly, the third component, C, that is the research, it is comprised of the following, where number 1 is number of registered parent varieties, technologies, patents, varieties, technologies, breeds, and creative work at international level per full-time faculty, 2 marks. Number of registered patents, varieties, technologies, breeds, and creative work at international level, per full-time faculty. Commercialization of registered patents, varieties, technologies, breeds, and creative work, 1 mark. Number of university industrial linkage through ORIX, 2 marks. Ratio of active PhD students to total active enrollment students, 3. Amount of external research grants, 1 obtained by higher education institutions, if it is greater than 0.6 million, then 4 marks. Number of travel grants, 1 per presentation of papers approved per full-time faculty, 2 marks. Moreover, total number of papers published in impact factor journals, ISI Web Sciences, and HSC recognized XY category journals by higher education institutions, 3 marks. Publication in ISI impact factor I was talking about the publication in ISI impact factor journals for last calendar year पर फुल टाइम फैकल्टी 5 इसके मार्क्स हैं. साइटेशंस हैं फिर पिछले 5 सालों की जो लोगों की हुई हो. यूनिवर्सिटी इंडेक्स है. नंबर ऑफ W कैटेगरी जर्नल्स पब्लिश्ड बाय द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, साइंस एंड सोशल साइंस जर्नल्स अगर कोई हो अदारे के तो. नंबर ऑफ X कैटेगरी जर्नल्स पब्लिश्ड. इंटरनेट बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कितनी है. डिजिटल लाइब्रेरी यूटिलाइजेशन कितनी है. नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सिम्पोजिया, वर्कशॉप, सेमिनार्स organized at least 5 international participants traveling from abroad specifically for the conference by the higher education institution. इसके 2 नंबर हैं. Number of national professional conferences, symposia, workshop, seminar organized by higher education institution. तो ये जनाब इसके सारे मिला के नंबर कुछ बनते हैं जो रैंकिंग में HEC कंसिडर करता है. टोटल PhD आउटपुट ड्यूरिंग लास्ट ईयर कितने हुए वो उसके मार्क्स हैं. टोटल PhD आउटपुट पर फुल टाइम फैकल्टी ड्यूरिंग द ईयर 2014, thus it becomes total 41 marks. इसी तरह फाइनेंस एंड फैसिलिटीज़ के हवाले से
कुछ बेंचमार्क्स हैं जिनकी बुनियाद पर मार्क्स मिलते हैं और फिर ये टोटल रैंकिंग में आते हैं। रेशियो नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर्स टू टोटल बजट 2 मार्क्स हैं। अमाउंट जनरेटेड थ्रू ओन रिसोर्सेज 2 मार्क्स हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन रिसर्च लाइब्रेरी लैब एंड एज परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट 2 मार्क्स है। नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी पर स्टूडेंट एक्सक्लूडिंग ई लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी बुक्स 1 मार्क है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग एक्सटर्नल स्कॉलरशिप पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 नंबर है इसका। कंप्यूटर्स पर स्टूडेंट कितने अवेलेबल हैं कंप्यूटर लैब के में, कंप्यूटर्स पर फुल टाइम फैकल्टी के पास कितने हैं, तो ये इस तरह से बना के 10 मार्क्स बनते हैं। फिर सोशल इंटीग्रेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है। नंबर ऑफ कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स, सिविल एंगेजमेंट्स एंड कम्युनिटी सर्विसेज बाय हायर एजुकेशन का 1 नंबर है। नंबर ऑफ इंटरनेशनल collaboration exchange program, outbound inbound student faculty at least 15 days for faculty and 1 month for students कोई कहीं गए आए हों एक्सचेंज प्रोग्राम। नंबर ऑफ एनरोल्ड फॉरेन स्टूडेंट्स पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फॉरेन फैकल्टी पर टोटल फैकल्टी, तो ये इन लोगों को के भी मिला के ये 4 नंबर हैं। तो बड़ा कंप्रीहेंसिव इन डेप्थ जाके क्राइटेरिया हायर एजुकेशन कमीशन का एक एक चीज़ को माइन्यूटली देख के वो रैंक करते हैं, मार्क्स देते हैं, टोटल रैंकिंग बनती है। दैट वाज ऑल अबाउट द रैंकिंग क्राइटेरिया बाय हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड हायर